So, good morning, everyone. Good morning, sir. So, in the last class, good morning, we have gone through several essential register and we got to know about their tasks. And we have also tried to draw their diagrams. Now, today, let's discuss something else. First, typical operating steps, how those operation is performed. Programs reside in the memory through input devices. Okay, nothing to explain. You know that. Then PC. PC stands for what? PC stands for program counter. Okay. So PC is set to point to the first instruction. The contents of PC are transferred to MAR. Now quickly tell me what is MAR? Sir, memory address registers. Very good. So contents of PC are transferred to MAR. Then a read signal is sent to the memory. The first instruction is read out and loaded into MDR. Now again, you tell me what is MDR? Memory data registers. Very good. So that is memory data register. The contents of MDR are transferred to IR. So same question, what is IR? IR is, quickly tell me what is IR? It is instruction register, okay? Decode and execute the instructions. So these are the different steps that is being involved, okay? Typical operating steps. You know that we have also discussed this in the last class, but still write these steps in your copy and don't forget that. You need to understand the sequence, how those operations is being carried out. Okay, then operands. So what are operands? Operands are there, the means those on which this operand is performed. Okay, now get operands for ALU, because without operands, how could you perform? How that ALU can perform that operation, right? For that, we need to take the help of general purpose register, right? And memory, of course, you need to put that. So address to MAR, read, then MDR to ALU. After that, after getting the operand, we can perform the operation in ALU. Now, after the operation is performed, the result will be stored back to some memory location. Okay. So address to MAR, result to MDR, and that is right because that content is being now overwritten. Now, I hope you got the difference between read and write operations clearly. Can I assume so? Yes, sir. Very good. Read and write operation, क्या difference था अब लोगों को समझ में आ गया. Now, जब ये हो रहा था, when these things are going on, then you know that the PC program counter will be incremented to the next instruction, so that this will be going on like this. So this much you need to know about this operation steps. Now let's come to the today's topic, that is interrupt. No doubt this is a very important topic, interrupt. Normal execution of programs
may be preempted if some device requires urgent servicing. The normal execution of the current program must be interrupted, and for that the device raises an interrupt signal. And to deal with that interrupt, service routine is there. Current system information backup and restore. PC, general purpose register, control information and specific. Now, what is actually going on? देखो, interrupt means क्या है? कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है, बीच में उसको क्या करना? टेम्पोरली स्टॉप करना तो मैं नहीं बोल सकता हूँ. टेम्पोरली ये सिग्नल देना कि कुछ और अर्जेंट टास्क है जिसको पहले परफॉर्म करना है. आर यू गेटिंग मी? सो जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, ठीक है, उसमें से अलग होके और कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ टास्क है जिसमें अर्जेंट नीड ऑफ द प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड. और जो ये इंफॉर्मेशन है कि कहाँ अर्जेंट कुछ टास्क करना है, ये एक सिग्नल के जरिए दिया जाता है. इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरप्ट सिग्नल. ठीक है. अब ये है कि आप जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था उसको छोड़ के वो वाला सिग्नल का जो काम है वो करना है. तो क्या होगा, जो पहले जो जिसमें कर रहे थे उसके बारे में तो स्टोर करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा ताकि वापस आके फिर से उसी स्टेप से हम क्या कर पाए, कंटिन्यू कर पाए. राइट. फॉर दैट वी हैव इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ओके, ठीक है. तो दिस इज इंटरप्ट. आप खुद भी बोलते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा था, लाइट चली गई तो थोड़ा सा इंटरप्ट आ गया, तो मुझे फिर से लाइट जब आएगी क्या करना पड़ेगा, वहां से रिज्यूम करना पड़ेगा. ऐसा बोलते हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. वही होता है ইণ্টাৰাপ্ট, और যদি আমি অসমীয়াত কওঁ ব্যাঘাত. ওকে, অলপ তোমাৰ কামটো পজ কৰিবলগীয়া হৈ যায় যাতে তুমি কিবা এটা কাৰণত তুমি বাধা, কিবা এটা প্ৰব্লেম পোৱা. সো ফৰ দ্যাট ইউ নিড টু ষ্টপ ফৰ এ while, again you need to begin when the condition becomes normal. Similarly, in case of our processing, processor also, this thing is going on. So we are going to study about that. The interrupt, different types of interrupt. As I already told you, this is a kind of signal, right? Interrupt is a signal emitted by hardware or software when a process or an event needs immediate attention. ठीक है. तो एक सिग्नल है, याद रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरप्ट, व्हाट इज दैट? ए सिग्नल. राइट. ये कौन जनरेट करता है आपका? या तो हार्डवेयर भी कर सकते हैं, हार्डवेयर पार्ट से भी कुछ हो सकते हैं ये, या तो कोई सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये सिग्नल रेज कर सकते हैं. When a process or an event needs an immediate attention. So interrupt is a signal emitted by either hardware or software when a process or an event needs immediate attention. It alerts the processor to a high priority process requiring interruption of the current working process. यही हो रहा है ना कि जो प्रोसेसर है अभी करंट एग्जीक्यूशन जो कर रहा था उसको पॉज करके जो हाई प्रायोरिटी, ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है इसीलिए तो ये वाला पॉज करके वो वाला स्टार्ट करना है. तो ये किसको हम अलर्ट कर रहे हैं? प्रोसेसर को. ठीक है. इट अलर्ट्स द प्रोसेसर टू ए हाई प्रायोरिटी process requiring interruption of the current working process. In input-output devices, one of the bus control line is dedicated to this purpose, and this is known as I have already told, ISR or interrupt service
routine. So I hope that the definition part is now clear to you. Yes, sir. Okay. Again, let's try to know that when a device raises an interrupt, say process I, the processor first completes the execution of the instruction I. ठीक है? Then it loads the program counter with the address of the first instruction of the ISR. Before loading the program counter with the address of the interrupted instruction is moved to a temporary location. Therefore, after handling the interrupt, the processor can continue the process I+1. तो कभी क्या हो सकता है, जो करंट प्रोसेस कर रहा था, से I, इसका इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन जो हो गया है, ठीक है, तो इसके इंफॉर्मेशन एक टेम्पोररी लोकेशन में रख दिया गया है, इसके द्वारा obviously your processor is doing that. Then what it will do, program counter, आपको पता है कि program counter हमेशा क्या करते हैं, next instruction जो execute करना है उसको point करता है, right? Yes or no? हमने पढ़ा था, मैं तब भी बोला था आप लोगों को Yes, कि बहुत sir. इंपॉर्टेंट है. हाँ, पर अभी क्या किया, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली आई हमारा करंट इंस्ट्रक्शन है, मतलब करंट प्रोसेस है सपोज, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, I+1. वेरी गुड. बट अभी जो है पीसी को I+1 तक पॉइंट नहीं करके किस में कर दिया, जो आईएसआर है, आईएसआर मैंने अभी आप लोगों को बोला था, आईएसआर मतलब क्या था, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, राइट? Internet service. तो Yes, उसमें sir. Routine. इंटरप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली आप I+1 तक पॉइंट नहीं करके कहां पॉइंट करने लगी आपका पॉइंटर, ISR का फर्स्ट इसमें. ओके, काइंडली म्यूट योर माइक whoever is doing that. ओके, सो ठीक है, तो I+1 पे पॉइंट नहीं करके अभी जो हमारा पीसी है कहां पॉइंट कर रहा है आपका, ISR का इंस्ट्रक्शन में. इसका मतलब साफ है कि पहले इंटरप्ट को हैंडल किया जाएगा, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये कहां आ जाएगा, फिर से आपका I+1. I+1. Very good. So that's the way this thing is going on. While the processor is handling the interrupt, it must inform the device that its request has been recognized so that it stops sending the interrupt request signal again and again. ठीक है, जब आप वो इंटरप्ट जिसने जनरेट किया था, सपोज से हार्डवेयर कोई एक डिवाइस कर रहा था और वो प्रोसेसर उसमें आप काम करने लगी है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू दैट डिवाइस, ताकि वो बार बार फिर से ये रिक्वेस्ट नहीं भेजे. ठीक है, क्या रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल. ओके, also saving the register so that the interrupt process can be restored in the future, increases the delay between the time an interrupt is received and the start of the execution of the ISR. And this thing is known as interrupt latency. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ और आज का क्वेश्चन भी मैं इसमें पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना. Saving the register so that the interrupt process can be restored in the future, increases the delay between the time an interrupt is received and the start of the execution of ISR. एक इंटरप्ट जनरेट किया गया था, ठीक है, अब जिस वक्त वो जनरेट किया था आईएसआर में वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक इंटरप्ट है, जब इंटरप्ट आया था और जब प्रोसेसर जो है उस इंटरप्ट को हैंडल किया है, मतलब उस इंटरप्ट के साथ काम किया है, इसके बीच कुछ टाइम लग गया आपका, मतलब प्रोसेसर ये कुछ टाइम लिया, प्रोसेसर टेक्स टाइम टू हैंडल दैट इंटरप्ट. ओके, and that time is known as interrupt latency.
Okay, so what is interrupt latency? Interrupt latency is that gap. Okay, is that delay. What is that? The time the interrupt is received in the ISR and to the time the processor starts executing that interrupt. Okay, that handling that interrupt. So that is known as interrupt latency. মানে কি হৈছে ইন্টাৰাপ্টটো যেতিয়া আহিছিলে আৰু ইন্টাৰাপ্টটো যেতিয়া হ্যান্ডেল কৰিলে প্ৰসেসৰে সেই সময় গ্যাপটো that time gap is known as what? Interrupt latency. So my dear students, to all of you, to this first question that you need to answer is that what is interrupt latency? Is my question clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Next, let me clear this. Priority interrupt from the term itself. ये term टूर पड़ा, ये term से आपको समझ में आ रहा है कि किसी ढेर सारा interrupt में से मैं किसी को ज्यादा priority दे रहा हूं, ठीक है? I'm biased towards some particular interrupt. So let's see what is this. A priority interrupt is a system which decides the priority at which various devices which generates the interrupt signal at the same time will be serviced by the CPU. Okay, तो बहुत सारे हैं उसमें से सेम टाइम में अवेलेबल है वो सारे इंटरप्ट. अब इसमें से किसको पहले CPU सर्विस देंगे? The system has authority to decide which conditions are allowed to interrupt the CPU while some other interrupt is being serviced. Okay, so the system has the right to decide about this. Then generally devices with high speed transfer, such as magnetic disks, are given high priority, and so devices such as keyboards are given low priority. ये जो लाइन है ध्यान से देख लो और ध्यान से नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये पूछ सकता हूँ कि मैग्नेटिक डिस्क एंड कीवर्ड्स इनमें से किसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा whenever the interrupt is coming from these two devices? So generally magnetic disks. Okay, high speed transfer from this magnetic disks are given high priority, while from keyboards that is given low priority. When two or more devices interrupt the computer simultaneously, the computer services the device with the higher priority first. So बुझी पाला है तू? So समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है? Yes, sir. ठीक है, मैं आज इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. जितना मैंने अभी पढ़ाया उसको फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने के बाद आप लोग देख लेना, क्वेश्चन को आंसर कर लेना, ठीक है? उसके बाद फिर से इंटरप्ट हम कंटिन्यू रखेंगे. This is all for today. Thank you. Let me take the attendance first.